Hello friends, welcome. So today we are going to start with other modes of nutrition in plants. So let's get started. Now we have started about the mode of nutrition in which the organism prepare their food by themselves using the raw materials, right? And the type of mode is known as autotrophic, right? So autotrophic में ठीक है, ऑटो से आप इसको याद कर लीजिए एंड द जो भी रेडीमेड द ऑर्गेनिज्म विच टेक द रेडीमेड फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय the plant, the autotrophs, they are known as heterotrophs, right? Hope you all remember. You can check out the first part of this chapter to learn more about it. We have discussed this autotrophs and heterotrophs in detail in the first part and about the photosynthesis topic also. In the second part, we did some tests like the iodine test and the synthesis of food, which were there, and more about photosynthesis. And today's topic is going to be other modes of nutrition in plants. So in this video, we are going to complete this whole chapter. So watch this video till the end. So there are some plants which do not have chlorophyll. Now guys, have you ever wondered कि कुछ plants ऐसे होते हैं which don't have chlorophyll? Now they cannot, if they will not have any chlorophyll, so how will they synthesize their food, right? So they can't synthesize their food. Now how did they survive? From where do the plants derive nutrition? अब वो survive कैसे करते हैं, उनके पास nutrition कैसे आता है, derive कैसे होता है nutrition? Have you ever wondered the answer to this question? Right, we are going to explore this. ठीक है, so आगे देखते हैं. So let's move forward. Now they are saying that like humans and animals, such plants depend on the food which is produced by the other plants. The plants which have chlorophyll, which have chlorophyll, ठीक है, वो भी मतलब heterotrophic mode of nutrition को ही follow करते हैं. So जिनके पास chlorophyll नहीं होता है ना, जिनके पास chlorophyll नहीं होता है, they follow the heterotrophic, ठीक है. So वो autotrophs नहीं होते हैं, these are heterotrophs. Not all the plants are autotrophs, right? तो कुछ plants heterotroph भी होते हैं जिनके पास chlorophyll नहीं होता है. Now look at figure 1.5. Do you see? So this is the figure. Let me show you over here. This is cascota, right? So this is the type of host plant, right? So ये देखते हैं हम आगे. Okay. Now look at figure 1.5. Do you see yellow tabular structures twinning around the stem and the branches of a tree? अब देखिए ये tree के अराउंड आप नोटिस करेंगे कि ये येलो ब्रांचेस निकली हुई हैं, राइट? सो दीज आर येलो, है ना, येलो सिलेंडर इनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं. सो व्हाट इज दिस, राइट? नाउ दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्कोटा विच इज अ मार्बल, राइट? तो इसको आप कैस्कोटा बोलते हैं. सो दिस प्लांट इज बेसिकली कैस्कोटा विच इज अ मार्बल. याद रखना, जिसके भी अराउंड ये येलो ट्विनिंग होती है, येलो ट्री के अराउंड होता है, दैट इज कैस्कोटा. Now it doesn't have any chlorophyll, ठीक है, इसके पास chlorophyll नहीं है. You can see this picture right over here. Now it does not have any chlorophyll. It takes the ready-made food which is produced by the plant, right? जो भी plant produce कर सकते हैं उनसे ये ready-made food लेते हैं. Now on which it is climbing. अब जिस पे वो climb करता है ना, that is called as host. तो जिस पे वो chlorophyll लेने के लिए climb करता है, that is called host. And since it deprives the host of valuable nutrients, it is called the parasitic plant. It comes in a variety of parasites. So it's a parasitic plant, remember, right? Are we and the other animals also parasitic like these plants? ना क्या आप सोचते होंगे कि these plants can't prepare their own food and like animals and humans? So क्या animals and humans भी parasitic हैं, parasites हैं? Now you should think about it and you should discuss it with teacher. ठीक है, आप टीचर से डिस्कस करिए अपने टीचर के साथ. Now have you seen or heard plants that can eat animals? Of course, that's carnivores. Yes, carnivores plants जो कि जो plant जैसे कि example है. So let's explore more about it. Let's learn more. Now there are few plants which can trap insects and digest them. कुछ plants ऐसे होते हैं जो कि trap कर देते हैं insects में and they could digest these insects. Now such plants may be green or some other in color. Green भी हो सकते हैं, कोई other color भी हो सकता है इनका. तो इनका जो है वो color green भी हो सकता है, कोई other color भी हो सकता है. Alright, so these plants are called as what? They're insectivorous plants, right? Now is it not amazing? बिल्कुल amazing है. Such plants may be green or of some other in color. Look at the plant in figure 1.6. This one, right?
Let me show you the full figure over here. Right, so the picture like structure is the modified part of the leaf. ये जो पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर है ना, दिस वन, राइट, ये जो निकल रहा है आपको यहाँ पे. So what is this? This is just a leaf, modified leaf structure, right? Now the apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth. अब इसकी ये देखिए, ये वाली lid है इसकी. So this is the lid over here, lid, and this is the leaf modified into a picture. ठीक है, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है, राइट, जैसे ये एक इंसेक्ट है एंड वो इसके अंदर आ गया, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस लिड विल बी क्लोज्ड. ठीक है, और देन द इंसेक्ट इज कंप्लीटली ट्रैप एंड व्हाट इट डज, इट इज entangled into the hair of the picture plant. So remember this. Now inside the picture there are hair which are directed downwards. देखिए ये hair है जो कि downwards है. तो what happens is when an insect lands in the picture, the lid closes and trapped insects get entangled into the hair. मैंने आपको बताया lid बंद हो जाती है जब insect आ जाता है. तो now the insect is digested by the digestive juices. ठीक है, तो insect जो होता है उसको digestive juices से digest किया जाता है, secreted in the picture. Picture में, that's not picture or image, picture वाला image नहीं है वो, but this is picture plant, right? तो जो picture है क्या होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं एंड सच प्लांट्स विच ट्रैप इंसेक्ट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ऑलरेडी वी हैव लर्नड इट इन 6th grade, so yeah, hope you all remember. Now is it possible that such plants don't get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये ऐसा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पॉसिबल है कि जो प्लांट्स जो हैं, ऐसे प्लांट्स को सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं सॉइल से? सो लेट्स लर्न अबाउट इट. ओके, come to saprotrophs. Next topic is saprotrophs, right? Now what are saprotrophs? Now guys, you might have seen a package of mushrooms, right, in the vegetable vendor sold them in the vegetable market, right? You also have purchased them. तो क्या होता है, you may have also seen fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season. अब rainy season पे कुछ fluffy से patches आना start हो जाते हैं, तो वो क्या है, हैव यू नोटिस रेनी सीजन में जो वुड पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं फ्लफी जैसे, एंड मशरूम में भी एक ऐसी एक्टिविटी होती है. तो लेट्स फाइंड इट आउट. नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डिड दे गेट दैम. अब उनको ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? देयर आल्सो अ टाइप ऑफ अ कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, राइट? Let's perform an activity. Take a piece of bread and moisten it with water. Moisten it with water means you have to sprinkle some water so that it is moist. It is moistened right now. ठीक है, तो उसमें मतलब moisture आ जाता है. मतलब basically you have to sprinkle some water in this and वो उससे थोड़ी सी मतलब उसका texture थोड़ा जैसे moisten हो जाएगा, and this is what we need. You have to leave this bread which you have sprinkled some water. You have to leave it in मॉइस्ट वार्म प्लेस. कोई गर्म मॉइस्ट जगह पे रखना है आपको 2 to 3 days के लिए, और अंटिल इट बिकम्स फ्लफी एंड इट इज़ वाइट एंड जो फ्लफी पैचेस हैं वो इस पर अपीयर हो जाए. नाउ दीज पैचेस मे बी इन डिफरेंट कलर्स लाइक द वाइट कलर, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो इन दो चीज़ों से यू कैन ऑब्जर्व द पैचेस. You have to write down the observation which you observed while you were looking at these patches. Now most probably you will see cotton like threads. देखिए फिगर, देखिए कैसा लग रहा है ना ये. So this is moistened bread जिसको कि आपने छोड़ दिया था, and ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा. ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी ना. मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे जो कि आपको अपनी ब्रेड के पीस पे दिखेंगे. Now these organisms are called fungi. The type of organism, these type of organism are called fungi. Now they have different mode of nutrition. उनका different mode होता है. Now what it did, they just secrete the digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. तो ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली वो लोग डिकेइंग एंड डेड मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं एंड इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड फॉर्म अ सोल्यूशन. नाउ व्हाट दे डिड नेक्स्ट इज दे देन दे अब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स इन इट. जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे अब्जॉर्ब इट.
ठीक है. So this type of nutrition is called saprotropic nutrition, which you get from dead and decaying matter, right? The mode of nutrition in which organism taking nutrients from the dead and decaying matter. Dead and decaying बहुत important है. जो सारा खाना डीके हो जाता है उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, दैट इज नोन एज saprotropic mode. Now fungi also grow on pickles, leather. इसका एक एग्जांपल हमें fungi है, ठीक है. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली fungi है इसका आंसर. The fungi grows on pickles, leather, clothes और जो भी आर्टिकल्स जिसको कि आप छोड़ देते हैं, the articles which are left in hot and humid weather, ठीक है. Now ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. अब जब रेनी सीजन होता है तो बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनांस ऑफ फंजाई इन योर हाउस. नाउ द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, फंजाई के स्पोर्स, ये जनरली आपको एयर में ही मिलते हैं. नाउ व्हाट दे डिड इज दे जस्ट लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग. जो भी मॉइस्ट चीज़ें होती हैं, दे लैंड ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स विच आर वार्म्ड एंड wet things, and what they did is they just germinate and grow. Germinate हो जाती है और बढ़ती जाती हैं. Now can you figure out how can we protect from the things getting spoiled in winter especially, right? तो क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा तरीका? Now some organisms live together and share shelter, which is called a symbiotic relationship between them. So कुछ organisms ऐसे होते हैं which share a symbiotic relationship, means जो एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करते हैं, राइट. कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और एक ही कॉमन शेल्टर को शेयर करते हैं. सो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज? सिम्बायोटिक. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम सिम्बायोसिस, symbiotic. So this type of relation is called symbiotic relationship. Remember. Now for example, certain fungi lived in the roots and the tree provides nutrient to fungus. अब tree एंड फंगस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. ट्री उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फंगस रिटर्न में क्या करता है, उसको इट हेल्प्स इट टू रिसीव एंड टू टेक अप वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से न्यूट्रिएंट्स वाटर ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ट्री को. द ऑर्गेनिज्म विच आर नोन एज लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज alga. Again they have given an example like alga, example of alga. एंड तो alga का एंड लाइकेंस का हमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो alga एंड लाइकेंस दोनों के साथ एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड लाइकेंस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज द alga लिव एंड फंगस लिव टुगेदर. यानी लाइकेंस में जो alga होता है एंड जो फंगस होता है वो साथ में रहते हैं. ये दोनों दे शेयर द रिलेशनशिप, symbiotic relationship. Now how nutrients are replenished in the soil. सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे अब्जॉर्ब होते हैं, कैसे रिप्लेनिश होते हैं. Now have you seen farmers spreading fertilizers or manure in the soil? What is the use of doing this? Have you ever wondered? Now or gardeners using their lawns or in pots. अब आपने कभी देखा होगा farmers they are spreading manures and fertilizers in the fields. Now you learn that plants absorb mineral nutrients from the soil. अब वो कहाँ से, soil से ही तो absorb करते हैं, through their roots. Roots absorb करती हैं सारे nutrients कहाँ से, soil से. Now so their amounts in the soil keep on declining, कम होते रहते हैं इनकी nutrients. Now fertilizers and manures कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम. नाइट्रोजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था. नाइट्रोजन उनके अंदर बहुत ज़्यादा मेन्योर में नाइट्रोजन बहुत होता है. दैट्स वाई पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, जो कि प्लांट्स के ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई फार्मर्स ऐड रेगुलरली, राइट. नाउ द प्लांट्स कैन ग्रो एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्लांट्स. अब आप मेन्योर वगैरह क्यों डालते हैं? to fulfill the requirement, the healthy requirement, the nutrient requirement, sorry, the plants need. Usually crops require a lot of nitrogen to make proteins बनाने के लिए, starch बनाने के लिए we need a lot of nitrogen. Now after the harvest, जब harvesting हो जाती है, the soil becomes deficient in oxygen, deficiency हो जाती है oxygen nitrogen की. Now you learned that through nitrogen gas, though nitrogen gas is available plenty in the air, 78%.
of nitrogen is available, which is plenty. Plants cannot use it in manner they can use carbon dioxide. जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं वैसे ही नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर पाते. दे रही नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, उनको सोल्यूबल जिससे कि वो अच्छे से घुल जाए, मिल जाए, ऐसी फॉर्म में चाहिए. एंड क्या होता है, बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड. एक नया नाम आ गया हमारे यहाँ पे, राइजोबियम. ठीक है, राइजोबियम अपना खुद का फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता. सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम पीस, जो अभी ग्राम होती है दालें, peas and मूंग दाल and beans and other legumes and provides them with nitrogen. उनको नाइट्रोजन से प्रोवाइड करता है राइजोबियम. मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट्स. तो दाल जो है ना, वो जो भी पल्सेस है दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट्स. Thus, in the return, the plants provide food and shelter to bacteria. बैक्टीरिया को plants shelter provide करती हैं. Now, they thus have a symbiotic relationship. ठीक है, तो इसीलिए that's why they have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers. ये जो association है, it is a great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. इसलिए उनको ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट नाउ दे हैव गिवन योर कंक्लूजन. So then now we can conclude that in this chapter we have learnt about the plants which are autotrophs, and only a few other plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic. तो yeah, they derive nutrition from the other organism, जो कि दूसरे organism से अपना nutrition derive करते हैं. These are parasitic and saprotrophic. Now all animals are categorized as heterotrophs since they depend on the plants, the ready-made food. Right? So can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो insectivorous plants है they are partial, मतलब थोड़े थोड़े हैं, partially they are heterotrophs. You can find this answer to the question. Okay, so with this we have completed this chapter. Hope you enjoyed learning with me. So please watch the 3 parts to understand this topic. So thank you for watching the video. Bye bye.